वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, क्रिसमस होने में और सिर्फ एक दिन बाकी है, इसलिए विश यू ऑल अ मेरी क्रिसमस। So guys, if you are interested in knowing how I created this makeup look, then please keep on watching this video. So guys, to prep my skin at first, I am going to use my DIY facial oil. So if you guys are interested in knowing how I prepare this DIY facial oil, I have a video on that and I will link that in the description box below. Next, to shape my eyebrows, I am going to be using Maybelline NYX Eyebrow Duo Shaper. So guys, फाउंडेशन के लिए आज मैं मिलानी कंसील प्लस परफेक्ट 2-in-1 फाउंडेशन यूज करने वाली हूँ एंड मेरा शेड है 03। So this foundation basically acts as a concealer and foundation. So at first I will be using it as a concealer on my eyelids and I will blend that with my beauty sponge. So concealer को सेट करने के लिए मैं यहाँ पे Blue Heaven का Sapphire Translucent Powder यूज करने वाली हूँ। For my eye makeup today, I'm gonna use Huda Beauty's Topaz Obsession eyeshadow palette. Trust me guys, the colors are really pigmented and you can create various looks with the colors available in this palette. So guys, सबसे पहले मैं इस ऑरेंज शेड को लेकर अपने क्रीज एरिया पे अप्लाई कर लूँगी एंड फिर मैं उसे अपने ब्लेंडिंग ब्रश से ब्लेंड कर लूँगी। नेक्स्ट मैं हुडा ब्यूटी नियॉन ऑब्सेशन आई शैडो पैलेट से एक येलो शेड को लेकर अपने क्रीज एरिया कलर के साथ ब्लेंड कर लूंगी ताकि बहुत ही अच्छा एक ऑम्ब्रे इफेक्ट दिखे। सो नेक्स्ट मैं इस डार्क ब्राउन शेड को लेकर अपने आईलिड्स पर अप्लाई कर लूंगी एंड फिर मैं उसे अपने क्रीज एरिया कलर के साथ ब्लेंड कर लूंगी। सो आज मैं कट क्रीज लुक करने वाली हूँ एंड टू कट माई क्रीज आई एम गोना यूज मिलानीज कंसील प्लस परफेक्ट 2-in-1 फाउंडेशन। नेक्स्ट मैं LA कलर्स न्यू ट्रेडिशनल आई शैडो पैलेट से एक वाइट कलर लेकर अपने आईलिड्स पर अप्लाई कर लूंगी। नेक्स्ट मैं उस कलर को अपने आउटर वी कलर के साथ ब्लेंड कर लूंगी ताकि कोई हार्श लाइंस न रहे। फॉर माय लोअर लैश लाइन मैं सबसे पहले इस डार्क ऑरेंज शेड को लेकर अपने लोअर लैश लाइन पर अप्लाई करके उसे ब्लेंड कर लूंगी।
smoke it a little bit, I'm gonna use this dark brown shade. अपने आई मेकअप लुक को स्टनिंग बनाने के लिए मैं यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का व्हाइट आई पेंसिल यूज करूंगी और मैं लोअर वाटर लाइन। Next, to draw out a winged eyeliner, I'm gonna use Wet n Wild's brown eyeliner. Next, to highlight the inner corner of my eyes, I'm gonna use Maybelline's Master Chrome in the shade Molten Gold. प्राइमर के लिए मैं अपने फेवरेट स्विस ब्यूटी इल्यूमिनेटिंग प्राइमर का यूज करूंगी। NYWay का ऑरेंज करेक्टर से मैं अपने सारे डार्क एरियाज को करेक्ट कर लूंगी। ऑरेंज करेक्टर ब्लेंड होने के बाद फिर मैं अप्लाई करूंगी मिलानी कंसील प्लस परफेक्ट 2-in-1 फाउंडेशन। कॉन्ट्यूरिंग के लिए मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ NYWay का कॉन्ट्योर स्टिक इन द शेड टॉफी। फाउंडेशन को सेट करने के लिए मैं वही ब्लू हेवन सफायर ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज करूंगी। ब्लश के लिए आज मैं वेट एंड वाइल्ड कलर आइकॉन ब्लश यूज करने वाली हूँ। नेक्स्ट मैं अपने फेस को हाईलाइट करूंगी विद Maybelline's Master Chrome Metallic Highlighter in the shade Molten Gold। उसी हाइलाइटर से मैं अपने ब्राउ बोन को भी हाईलाइट करने वाली हूँ। So for my lips, I am going to draw out my lips with Wet n Wild's lip liner in the shade Chestnut Maroon. लिपस्टिक्स के लिए मैं यहाँ पे आज 2 लिपस्टिक्स यूज करने वाली हूँ फ्रॉम Blue Heaven's Elegance Matte Lipsticks range in the shade 05 and 09.
use Blue Heaven's Walk Free Mascara. Finally, to finish off this makeup look, I'm gonna use Swiss Beauty's Makeup Fixer. So guys, अगर आप लोगों को मेरा ये क्रिसमस मेकअप ट्यूटोरियल पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। So guys, आज के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।